Hi guys, in today's video we'll cover a topic. It's called irrecoverable debts and provision for doubtful debts, and it's also one of those topics which carry forwards in a lot of other topics. Like for example, this would come in financial statements of sole traders. This would also come in financial statements of partnerships and incomplete records, and so on and so forth. Uh, so actually it's an important topic. So if you see here, the concept of irrecoverable debt itself, what is irrecoverable debt itself, तो उसकी definition क्या है, that's very important to understand. So someone, for example, one of your trade receivables. So trade receivable कौन होता है? जिसको हम credit sales करते हैं. So someone whom we are selling on credit, जिसको हम उधार पे अपनी inventory बेच रहे हैं, ठीक है? So that becomes your receivable. So वो रिसीवेबल जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए. तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब होता है दे डोंट हैव एनी मनी एनी मोर एंड दे आर आउट ऑफ बिजनेस एंड इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है. तो बैंकरप्ट हो गए, तो वो दे आर नॉट एबल टू पे द बिजनेस एनी मोर, ठीक है? और दे कैन लीव द कंट्री एज वेल. सो कोई आपके पैसे लेके चला जाए, आपका ट्रेड रिसीवेबल, कोई जिसको आपने सेल्स की थी प्रीवियसली, दैट पर्सन लीव्स द कंट्री एंड डज नॉट पे यू. तो द थिंग इज़ कि एट दैट पॉइंट you can't run after that person for that money. You have to yourself take a very logical decision, that is to write it off as an expense rather than running after the person to get the money. तो वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा. So for example, अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से हमारा एक ट्रेड रिसीवेबल है, उसका नाम है सलार. So Salar is our customer, and this guy, he actually उसको जो है ना, so if we see Salar's account, तो अगर हम सलार का अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे सलार का अकाउंट बना रहे हैं एंड सलार सॉरी वहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट लिखी है, यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट लिखी है, बट ओके सलार सलार का अकाउंट बना रहे हैं. एंड फॉर एग्जांपल वी सेल हिम some goods in 2020. So we say, okay, let's say we are selling him in January 2020. So let's say 1st January 2020, and हम उसको goods sell कर रहे हैं $1,000 के. So the journal entry here would be Salar debit, sales credit. Sales is a revenue account, तो उसको credit करेंगे और Salar के account को debit करेंगे, क्योंकि Salar is a he's your trade receivable, and trade receivables are assets. So assets, whenever assets increase you debit the account, whenever assets decrease you credit the account. तो यहाँ पे अगर हम let's say Salar is the person whom we sold goods on credit in 2020, in January 2020, and then later we found out कि जुलाई में वो हमारे पैसे लेके भाग गया. सही है, तो वो कंट्री छोड़ के चला गया. तो अब हम क्या करेंगे, we have to write Salar's account off. So we have to write the trade receivable off in order to record this as an expense, because it's not going to come anymore, because वो एक दफ़ा चला गया तो फिर वो हम ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि वो वापस आएगा. So the journal entry is irrecoverable debts debit. So debit credit, irrecoverable debts will be debited 1000, पूरे 1000 लेके चला गया, ठीक है? And then you can say okay, Salar credit. तो हमें irrecoverable debts के अकाउंट के अंदर, if you see the account, you'll have to record Salar on the debit side, because one is that irrecoverable debts is an expense. सही है, expenses are debited, एंड बिकॉज सलार विल बी क्रेडिटेड, ठीक है? तो सलार का अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसके अगेंस्ट जो दूसरा अकाउंट होगा दैट विल बी डेबिटेड. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओके, वील राइट जुलाई डेट है जिसमें वो भागा है, हम लिखेंगे इररिकवरेबल डेट्स. सो इररिकवरेबल डेट्स एंड द अमाउंट विल बी $1,000. तो $1,000 लेके भाग गया है वो. सो नाउ द थिंग इज़ कि अब जो है हम, बिकॉज ये हमारे पैसे लेके भाग गए, इन द एंड व्हेन वी आर मेकिंग द इनकम स्टेटमेंट, एट दैट पॉइंट वील हैव टू ट्रांसफ़र दिस एक्सपेंस टू द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है? तो जब भी हम एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं
तो बिकॉज ये अकाउंट जो है इसमें एक ही डेबिट साइड पे एक वैल्यू है, सो वील एक्चुअली क्रेडिट दिस अकाउंट, सो वी विल से इनकम स्टेटमेंट हियर. सो इनकम स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ एन अकाउंट. लेकिन CI में जो है ओ लेवल्स के कोर्स में दे डोंट मेक इट इन एन अकाउंट फॉर्म, दे मेक इट इन द वर्टिकल फॉर्मेट. से तो कभी स्टूडेंट रियलाइज़ ही नहीं करते कि इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली अकाउंट है, उसमें सारे रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स ट्रांसफ़र होते हैं. सो यहाँ पे अगर हम 1000 लिख दें, and now this is basically you have transferred the expense to the income statement. So what is the journal entry for transferring the expense to the income statement? You have to debit the income statement, so the account of income statement will be debited by 1000, and your so you write this debit and you write credit, और credit पे आप लिखेंगे irrecoverable debts. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज़ दैट irrecoverable debts को when I was a student and for a very long time it was called bad debts. ठीक है, bad debts. But now the thing is कि now the CIE examiners have also said that the students must write irrecoverable debts, not bad debts. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि अच्छा, नाउ वील जस्ट फास्ट फॉरवर्ड द स्टोरी. तो 2020 में सालार पैसे लेके भाग गया जुलाई में, एंड हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, तो वो हमारा एक्सपेंस बन गया. अब 2021 के अंदर नाउ द सेम गाय सालार, तो सालार नाउ फील्स गिल्टी एंड ही थिंक्स दैट उसने गलत किया, एंड उसको ये एहसास हो रहा है कि अच्छा अब गलत कर दिया है तो फिर गलती को कैसे सुधारूँ. तो वो क्या करेगा, वो वापसी आएगा एंड ही विल पे अस द मनी बैक. सही है. सो नाउ सालार, यू नो, व्हेन ही कम्स बैक ही सेज ओके, नाउ ही सेज दैट आई विल पे $40 फॉर एवरी $1. सो बेसिकली $1 के बदले वो हमें 40 सेंट्स देगा बिकॉज ही कांट पे द फुल अमाउंट. तो चलो हमने भी कह दिया ठीक है, आप फुल अमाउंट ना दें, आप सिर्फ गिव 40 सेंट्स अगेंस्ट एवरी $1. सो इफ़ यू सी 40 सेंट्स अगेंस्ट एवरी $1 मीन्स कि वो हमें देगा $400 बेसिकली, बिकॉज $1000 वॉज द अमाउंट दैट वॉज ओइंग. एवरी $1 हैज़ 100 सेंट्स. ठीक है, ये तो सबको पता होगा. एंड तो 40 सेंट्स वो अगर हमें देगा तो वो बेसिकली हमें $400 देगा. सही है. तो यहाँ पे हमने उसको जो है वो सबसे पहले हमें उसको so I'll do the journal entries first and then I'll do the account. So पहला step, the first step is to make the person your trade receivable again. So make the person your trade receivable again. So I'm writing TR for trade receivables. You guys should not write the short forms because it's not recommended. आप full forms लिखें proper. अगर आप you're short of time then you should go for the short forms. तो इधर you make the person trade receivable again, and this person he's not willing to give the full amount, so you make Salar your trade receivable again for $400. So Salar debit, तो debit Salar because he is becoming your trade receivable again. Trade receivable asset होता है. And credit bad debts, sorry bad debts नहीं, debts recovered account. So debts recovered के अकाउंट को आप जो है वो क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ 400. डेट्स रिकवर्ड बिकॉज इट्स एन इनकम, तो इस वजह से हम उसको क्रेडिट करते हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग, सालार को हम प्रीवियसली राइट ऑफ कर चुके थे एज एन एक्सपेंस, तो उसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए थे और प्रॉफिट कम हो गया था. अब वो बंदा वापस पैसे दे रहा है तो हमें उसको एज एन इनकम ट्रीट करना पड़ेगा बिकॉज नाउ प्रीवियसली वी हैड रिटन ऑफ दैट अमाउंट एंड आवर प्रॉफिट हमारा कम हो गया था उसकी वजह से. और अब जो है जब वो पैसे वापस दे रहा है तो ऑब्वियसली इट बिकम्स आवर इनकम, तो इनकम प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ कर देगी. एंड द सेकेंड जर्नल एंट्री इज़ टू रिकॉर्ड द रिसीविंग ऑफ द मनी. सो रिकॉर्ड द मनी रिसीव्ड, तो ऑब्वियसली वो हमें पैसे देगा थ्रू चेक, तो हम करेंगे डेबिट बैंक 400 एंड सालार को दोबारा क्रेडिट कर देंगे बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट योर ट्रेड रिसीवेबल एनी मोर. उसने आपको पैसे दे दिए हैं. ठीक है. सो दीज आर द 2 जर्नल एंट्रीज फॉर डेट्स रिकवर्ड. तो अगर हम डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट देखें, सो डेट्स रिकवर्ड इज़ एन इनकम अकाउंट एंड हियर बिकॉज यू आर मेकिंग सालार योर ट्रेड रिसीवेबल अगेन, तो डेबिट ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट डेट्स रिकवर्ड. तो यहाँ पे आप लिखेंगे सालार और यहाँ हम लिखेंगे $400. ठीक है.
ये हमारा डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट हो जाएगा. अब जो है वो इन द एंड व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एवरीथिंग टू द इनकम स्टेटमेंट, सो यू विल डू you will debit this account and write income statement here, and this thing will go to the income statement. And because of this, of course, transferring of debts recovered to the income statement की journal entry होती है simply you do debit the debts recovered account, like because अभी मैं ट्रांसफ़र करने पे डेबिट कर रही हूँ डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को, एंड you write the amount $400 and you credit the income statement. So income statement यहाँ पे credit होगी whenever income statement is being credited. So I want you guys to see this properly. Yes, so if you could see यहाँ पे मैंने जो है वो I have zoomed in. ये the whenever income statement is credited, that means it's something in some income is coming, ठीक है, because incomes are credited, ठीक है, and whenever income statement is being debited, so there's some expense. So when income statement is debited, when income statement is credited, profit बढ़ जाता है, and whenever income statement is debited, profit कम हो जाता है, ठीक है. So that's about it. इसको हमने close कर दिया account को, of course, because ये close हो गया है, and here this is also closed because ये irrecoverable debts ये भी close हो गया है. तो ये this was the first scenario. The second case was when the person feels that they want to repay the amount, ठीक है. तो हम उसको हम उस बंदे को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वो जो है रीपे कर दे. ओके, सो the next thing here very important is, so यहाँ पे in this chapter the three main concepts. One is irrecoverable debts, the second one is debts recovered. So if you see the definition of debts recovered, a trade receivable previously written off as irrecoverable comes back and pays the business, ठीक है. रिकवरी फुल भी हो सकती है, पार्शली भी हो सकती है. इस केस में हम पार्शली रिकवर कर रहे थे. अगर हम फुल रिकवर हो रहे होते तो हम वही अमाउंट से जो है ट्रेड रिसीवेबल को हमारा दोबारा ट्रेड रिसीवेबल बना लेते, एंड वही अमाउंट जो है वो डेट्स रिकवर्ड के अकाउंट में भी रिकॉर्ड हो जाती, एंड देन द रिसीविंग ऑफ द मनी, द सेम जर्नल एंट्रीज फॉर द फुल अमाउंट एज वेल, ठीक है. नाउ इफ़ यू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट थिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है एक तो व्हाट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. सो प्रोविजन हम हमेशा इवन इन डेप्रिसिएशन दैट प्रोविजन इज़ अ कॉन्ट्रा एसेट. तो कॉन्ट्रा एसेट जो है वो हमेशा अपने हमारे एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्चुअली हमारे ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है. सो व्हाट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? सो द नेम इटसेल्फ टेल्स यू डाउटफुल. डाउटफुल मीन्स हमें शक है कि ये लोग पे नहीं करेंगे, दे माइट नॉट पे इन द फ्यूचर, ठीक है. सो बिकॉज वी आर डाउटफुल, दैट इज़ वाई वील क्रिएट अ प्रोविजन, ठीक है. सो what is provision for doubtful debts? It's an estimation, very important. It's not an actual expense. Irrecoverable debts is an actual expense. कोई actually लेके आपके पैसे भागा है. इस केस में हम estimate कर रहे हैं कि अच्छा कोई जो ट्रेड रिसीवेबल है थोड़े बहुत वो लेके पैसे लेके भाग सकते हैं, ठीक है. तो हमें ये डर है कि कुछ लोग पैसे लेके भाग जाएंगे. सो it is an estimation of the trade receivables who might not pay you and might not pay the business in future. So what we are doing here is that we are accounting for the future losses that we might face, ठीक है. तो because accounting में concept होता है, इसको कहते हैं prudence. सही है. The prudence concept tells us that you should not overstate your assets and you should not overstate your profits, ठीक है. तो अगर आप provision create कर दें तो आपके expenses जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो फेयर वैल्यू पे शो होंगे. इसी तरह अगर आप प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपके एसेट्स की वैल्यू बेसिकली कम हो जाएगी. सो योर एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड एनीमोर. सो इफ़ यू सी यहाँ पे इफ़ वील जस्ट डू 3 cases here. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट केस, यू आर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. सो प्रोविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने आपको दिया ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है 10,000 in the first year, ठीक है. And they say make a so the question tells you make a provision of 2% of trade receivables. तो 2% of trade receivables हम simply 10,000
को मल्टीप्लाई करेंगे 2% से, तो हमारा आंसर इधर आएगा 200. So provision in the first year will be 200 and this will go as an expense to the income statement. ठीक है. फिर हमारे पास what happens is in case scenario 2, तो 2020 में हमारा provision जो है वो 200 था. Case scenario 2 में we are now maintaining the provision. Once you have made the provision, creation हो गई है, अब आप maintain करते हैं provision. And the question also use the same terminology, you have to maintain the provision. ठीक है. So now your trade receivables are 15,000 at the end of the year and they are saying again 2% of 15,000. So the answer comes out to be 300. तो आपको $300 जो है 300 जो है that is your that is your provision now. सही है. तो provision 300 हो गया, तो इसका मतलब provision increase हो गया. So point to note here is that the older provision was 200 and we had accounted for 200 in 2020. 2020 में हमने 200 के लिए अकाउंट फॉर कर दिया, उसको एक्सपेंस में डाल दिया. अब हमारा एक्सपेंस, क्योंकि हमारे ट्रेड रिसीवेबल इंपॉर्टेंट ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है. तो पहले 10,000 थे, अब 15,000 है. तो इसका मतलब ये है कि हमारा एस्टिमेशन बढ़ रहा है बाय हाउ मच, बाय 100. सो 100 विल गो इन द एक्सपेंसेस सेक्शन इन द इनकम स्टेटमेंट and 300 जो है that will go to the statement of financial positions. But I'll just come back on this also. But the important thing here to note is that 2% of trade receivables is 300 and अब जो है provision increase हुआ है by 100 and the increase goes to the income statement, not 300, क्योंकि obviously we have accounted for 200 last year. तो अब हम दोबारा वो 200 देंगे तो डबल हो जाएगा, डबल दफ़ा अकाउंट फॉर हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू अकाउंट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अकाउंट फॉर $100. सो 100 goes to the expenses section. So increase in the provision for doubtful debts, this is a case of increase. The increase in provision for doubtful debts, it goes to the expenses section of the income statement. If you go to the next okay, in 2022 the trade receivable here is 8,000 and again you have to make a provision, maintain a provision by 2%. So अगर 8,000 आपका trade receivable है and 2% you have to apply on that, so it means your answer will come out to be 160. ठीक है. तो पहले last year your provision was 300 and now it's 160. So it's the reduction in provision is reduction in provision is $140. तो $140 से आपका provision decrease हो रहा है. ठीक है. जब provision decrease होता है, so that is treated as an income in the income statement because last year मैंने ज़्यादा estimate किया था, ज़्यादा को expense में डाल दिया था last 2 years में. Now मेरा estimation कम हो गया. अब estimation कम हो गया तो it's like last year because I had to reduce my profit because my estimation was a bigger value. Now I have to increase my profit because my estimation has fallen down. ठीक है. So now the estimate, so basically now this goes as an income and it's added to the gross profit. If you see the provision for doubtful debts account, तो यहाँ पे हम करेंगे okay, the first year was 2020 and यहाँ पे हमने income statement लिखा. So for the first time you are charging this to the income statement. तो यहाँ पे because provision for doubtful debts increases on the credit side and decreases on the debit side, so for the first time you're charging provision. तो provision जो है वो increase credit side पे होगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 200. So it was 200 in the first year and balance carried down for the same year is 200. The year is 2020. ठीक है. आप इसको balance कर देंगे account को because 2020 में 200 है and then this balance carried down becomes the balance brought down for 2021. तो यहाँ पे balance brought down आपने लिखा और आपने यहाँ पे 200 लिख दिया. ठीक है. Now this it goes in 2021 and now you have to increase the provision for doubtful debt. So increasing again this account, इसको account को increase करने के लिए आपको इसको credit करना पड़ेगा. तो income statement यहाँ पे लिखेंगे and you'll write $100 and then obviously for the same year you'll have to calculate the balance carried down. So you write balance carried down and you write 300. So for now 2022, अब 2022 में the same balance carried down will become balance brought down and you write 300 and then now they are expecting you to decrease the provision. तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे income statement
तो इनकम स्टेटमेंट जब यहाँ लिखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट इट सेल्फ विल बी क्रेडिटेड, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड व्हेन इनकम स्टेटमेंट इज क्रेडिटेड इट इंक्रीजेस प्रॉफिट। तो ये जो है वो एज एन इनकम ट्रीट होता है इन द इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपने लिख दिया बाय हाउ मच इज़ द प्रोविजन रिड्यूसिंग। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ईयर, ऑलवेज टेक द चेंज डिफरेंस को लेके जाते हैं आप इनकम स्टेटमेंट में, वेदर इट्स एन इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 140 एंड देन बैलेंस कैरिड डाउन, जो हमने कैलकुलेट किया था प्रोविजन, दैट इज़ 160। अब प्रोविजन रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे दिस टोटल्स टू 300, बोथ द साइड्स आर 300 नाउ, एंड देन दिस व्हेन इट गोज़ टू 2023, जो कि अभी तक आया भी नहीं है, बट लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंस brought down and you'll write 160. So that's how the provision for doubtful debts account looks like, and it's pretty easy, you just have to follow the rule. ठीक है, तो पहला रूल है इंक्रीज करना है प्रोविजन, या you have to create the provision, so you have to credit the provision for doubtful debts account. If you have to increase the provision, you have to credit the provision for doubtful debts account. If you have to decrease the provision, you have to debit the provision for doubtful debts account. And one more thing here, journal entries are very important. So in the first case scenario जो 2020 वाला था, उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया बाय 200 एंड हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट किया है by 200. So I'm writing short forms. You guys are not supposed to write short forms. Because in 2021, again we have debited the income statement by 100, and we have credited the provision for doubtful debts account. So let me write the full form here. Provision for doubtful debts account by 100. ठीक है, in the third case हम जो है 2022 में दैट्स अ रिडक्शन। सो रिडक्शन प्रोविजन में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट को डेबिट किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट किया बाय 140 एंड हमने इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट किया है बाय 140। So let's change the color and tell you कि अच्छा ये जो है एक्सपेंस था, ये भी हमारा एक्सपेंस था, एंड ये हमारी इनकम है, रिडक्शन इन प्रोविजन। तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई फॉर ऑल द 3 years, तो 3 साल की ये जर्नल एंट्रीज हो गई। सो दैट्स अबाउट इट, बट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, 2 concepts are being applied. One is prudence. Don't overstate your assets, don't overstate your profits. So by creating a provision, you're not overstating your assets, you're not overstating your profits. The other concept that is being applied here is matching. जिस साल में आपने सेल्स किए उसी साल के अगर ट्रेड रिसीवेबल्स पे यू आर डाउटिंग, तो उसी साल आपको एक एक्सपेंस क्रिएट करना चाहिए। दैट इज़ हाउ यू मैच रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।